got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy, but we'll let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? It push me, are you in it? Don't say what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. Now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave with me. I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken, I bet. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh no, that is what they. Hello everyone. How are you guys? Hello Ashu. What is your leeches ID that with which you are playing? And Ashu, are you playing from our team or you are playing from some other team? Okay, we have 3 title players playing for our team. CM Psych Stealer, Iron Man and Ian. Oh, then that's great Ashu. And what is the leeches ID that with which you are playing? We have currently 85 players playing for our team. It's good. Our lineup is good this time. 20th place player in our team is almost 2200. And the other team, the Indonesian team just above us, has 151 players with an average rating of 2048. Damn. Their team does not have even one title player, but they are averagely extremely strong. Even the 50th place player is 2121. Chess Squad Russia is basically very small team. Only 29 players, but all of them are very strong, filled with IMFMs and title players. Let's look at other teams. K2 and Chess, as usual, the previous champions also, is extremely strong. Again, their 50th place player is almost 2200 as well. And the United Royal Legion. This team is again very strong. The 50th place player here is almost, yes Ashu, even I would be playing, is almost 2350.
And yeah, I don't know which language this is, probably Russian. This team is definitely the strongest. So many GMs playing. I think this is the only team where, and also K2 and chess, where grandmasters are playing. In K2 and chess, only one grandmaster is playing, but in this Russian team, there are so many of them. Not so many exactly, but yeah, there is two at least. I think more would join. Let's see what happens. More players are joining in. Let's see at the end of all this, how many players do we have playing for us. At the starting, we have 87 players playing. Let's see till the end how many join in. Okay, 1 minute to go. Nice. Strong players are joining in. And total 1000 players are playing in this tournament. So that's a huge number. Although still it's very small compared to the chess mood tournament, but still it's significant for the elite chess streamers battle. '91 players now. 20th player is almost 2200 now. And our average rating has soared to 1860. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. 0. And now we have our first game going. Okay, e4. As the speed of the internet is not that great, so I would prefer not to Berserk and get flagged in the games. Let's see what I can do without Berserking. H3, just preventing the move of bishop g4 because the pin would be annoying. Now queen e2, rook d1, just going for e5. The usual plan of the Smith-Morra, nothing special. Now just he allowed e5, so I would definitely go for it. Okay, now e6 or pawn captures, that's the question. I think I like e6. Let's try e6 this time. I usually capture the pawn, but now I want to try something different with e6. Okay. Now let's go for knight d5. Preparing some bishop e3 and bishop to b6 moves. Although definitely he has this. Now how am I supposed to counter it? Let's just continue with bishop e3. I don't really understand his idea of queen to a4. I mean a5. Let's play bishop f4. I have a simple idea of capturing this d6 pawn. And if king goes here, I would go knight g5, threatening knight f7. Okay, he didn't go for that. Now what does he do after I capture this pawn? He captures, I push the pawn. I think it should be good for me. I'll go for it. Okay. Now, how am I supposed to continue?
think I'll play bishop a3. Just keeping my bishop on this diagonal and keeping an eye on the e7 pawn as well. Simply rook to c1, bringing this rook out of this diagonal. Oh wow, I just blacked out on that. That is, I missed something. His goal is knight d3, that I can understand, but then I would play knight to d4. Oh. Hmm. Simple idea is rook here. Although I have lost a lot of pieces, but I may regain some of them, and also time is now the major factor. But yeah, no use prolonging this game. It's already lost. Wow, our team is in the third place. It's playing really well. And now the second place. That's too good of a start. Yeah, our team is really doing well. Berserk again. I wouldn't go for a Berserk. Bishop b4, simply threatening this. Opponent is offering a draw. Isn't it too fast to offer a draw? Hmm. I want to bring the rook into the game, but the problem is there is a c4 square. If I play rook d5, he can play c4. That's the problem. Let's play queen to a4 first, avoiding moves like this. And now probably I can bring the rook into the game. Because he cannot play c4 now because the queen and the... Yeah. Now he's again preparing for c4, but now I would invite him to play c4. The idea is if he plays c4 now, I have knight to b4, attacking the queen and the pawn on a2. Now what should I do? I think knight c4 looks good. Queen here.
He is desperate in exchanging the queens. But I really don't want to exchange queens here. I think I'll just bring my queen back. I think here I have to accept the queen trade. No other option. Now just rook back. Doubling the rooks. Now the target is simple, the d4 pawn. Bishop here, everything would now target the d4 pawn. And I don't think that he has good ways to defend it, because now knight e7 and then c5 probably. And now the c5. Now I'm wondering how he's planning to defend this. Yeah, I just get this and then I would play d3 and get this piece as well. This does not help because now I capture and then play d3. Okay, he resigns. We are in the 4th place. Still not bad. We are able to maintain a good position. Or Ivan's gambit. Decline. Okay, a4, threatening a5. Just c3, continuing with the normal development. h3, sling, bishop here, knight d2. I'll just go this. And then knight to g3 probably. Now the question is how to break the center. Or what to do next. My bishop, I would say, is almost equivalent to this bishop. My knight wants to go to g3 and probably to f5, but this bishop is blocking the way. This queen is the only one that is not doing much in this position, so I think I would like to exchange that. But the problem is if I play queen b3, he has b5. But yeah, I can allow him to do that. Because if he plays b5, I can capture. And the point is, wait, he also had this. This one I missed. This I completely missed.
I want to capture back with the pawn, and also the ideas are c5 and d4, just expanding on the queen side. Although I'm a piece down, but my piece placement are good. Pawn push. That's interesting. I'm targeting this b5 and the knight on e4 both. He has to find a way to defend both. Otherwise, he just loses one. Okay. Now my target is this e6 bishop, simply, and also protecting the pawn on c6. I feel that there is some problem with this. I think I can go. Yeah, I think I can go with this. Just improving the position of the queen. Don't exactly understand this plan. Because now after he captures, I get rook to d7. And he would be in a lot of trouble. Now I get rook to d7. Now how do I proceed? That is the question. I think I'll double up the rooks. That should be the way. Now there is an imminent backrank mate threat also, so he has to be careful for that as well. This feels like a mistake, but I'm unable to point it out. Oh yeah, I think knight d5 should be winning. Yeah, I think it should be. Let's go for it. The point being, I have knight e7 check. If he captures this pawn, I have knight to e7 check. And okay, he had this. This I missed, because now he can capture this. I don't have a back rank mate here. The knight is protecting.
I think it's better to resign, no point in continuing. Okay, he was 2600, so good enough. We are in third place, just 2 points behind the second place team. Not bad. You're playing pretty well. " 117 players currently playing for our team. That's brilliant. Ah, playing an SM. I think I would like to go for this sacrifice. Let's go for it. F4 is the most and the only move. Then I'll play queen h6. He plays knight to f3. And then I can think of some attack. Probably knight f6 and knight g4. That would be the simplest idea. Now bishop wants to come to h5 and continue with the attack because he cannot immediately block the attack. So that's why, okay, he wants here. For that I'll just bring knight g4. Now if he plays this, I'll just give this check. Okay. That's interesting. Probably knight g5 now. Then I'll play queen h5 and target for h6. Or even queen h5 is good. Now he wants this knight here. My idea is simple. I want to bring the rook to h6. If he brings knight f2, my rook will go to h6. Now when he captures, I capture with the pawn and then I have queen h2 ideas. I want to bring the other rook also somehow. But the problem is I'm not getting a breakthrough.
Let's try queen h4. In that way, my bishop can come to h5. He's allowing me to play queen h2 check. Okay, let's play queen h2. Now he has rook h3 targets. Hmm. Now I want him to play rook h3. I think I have some ideas like knight captures e3 check. If he captures with the queen, I have rook captures f3. I'm not sure if it is working, but it's an interesting idea. Oh, but he always has knight f3 back to defend. But still, it's interesting. I think I have to capture. Capturing with the bishop would have been better. Now I can try bishop here. Hmm. There is a huge problem with this move. I have a discover attack, but where should I discover attack the opponent? I think I'll play g6 first. Now he is in trouble because now I have knight captures e5 and I would be discovered. I would have a discovered attack over the queen. Now it's just winning for me. If I hopefully don't blunder anything, it should be winning because it's 3 pawns up. And now I also have h6 as a target. He also have knight captures e6 by the way. Knight check. Now h6, knight captures e6, rook e8, knight c7, rook here, and I would be winning this rook. Or wait, if I play h6, he can in no way attack my knight with the rook. So yeah, I think he should be winning. Okay, so he resigns. We are moving slow, but I think we should be steady. Third, we are fighting for third and fourth, 281 and 284. But we are not that far behind with the first and second place also. Just 20 to 30 points difference. Shlok is leading the way for our team with 26 points. Again, he's Berserking 2467. I'll not take the risk.
Not entirely sure if this is a good move. I think I'll go f6 and g5. He is helping me to expand on the queen side. I would gladly accept that offer. He wants this. That is clear. Now he cannot capture this because the queen would be hanging. And also I'm setting up some traps for him. The idea is if he does nothing here, now this is a problem. I can play bishop f6, I think. Bishop f6 threatening a mate here. How is he planning to defend that? If he plays something like rook g1, yeah, then I can destroy his structure probably. But I can still continue. I don't even need to capture here. Just maintain the pressure. Queen here. Simply looking for knight to g4 ideas. He wants d6. That is extremely clear. Okay. What happens if I play rook d6? Preventing d6 myself. He can capture f4. I would want to try this. Let's see what happens with this sacrifice. Now rook here. My plan is I can sacrifice the queen here. If he makes some random move like, yeah, now I have queen sacrifice. That was the whole point. And that was a brilliant checkmate. Okay, very close competition. We have been pushed to the 5th place. The URL, the Indonesian team, okay, K2 and chess is also close. But yeah, this Russian team is just taking the lead too far. Okay, although he's 2048, I wouldn't risk to Berserk here. B5 does not look good because I have F4. I don't know, but I like my position after F4. He can play knight C4. And still play F4.
Let's not exchange the pieces. I want to attack on the king side, so I want more pieces. Probably I will play g4, knight g3, and continue my attack like that. Let's go for it. Okay, g4. Let's. He will play b4, and then I would lose the e4 pawn. Need to be careful. I think let's go for bishop c2 first then. Overprotecting this, so that if he plays d4, I have knight d5. If pawn captures, he can play knight to a5. I would be able to deaden his knight, but would I want that? I think I should go for it. Knight to a5, and then I'll play knight d4, improving the position of the knight, and also in the future I have ideas of queen d3 threatening mate. Yeah, now knight d4. I am inviting him to play knight to c4 so that he falls into queen d3 trap and loses this. But he prevents that because now when he plays knight c4, it's protected by the rook. Now ideas are bishop h6, pawn captures, everything is just getting in. I also have some ideas of rook sacrifice on f7. Suppose he moves away with his rook to e8. Rook f7 is a very good sacrifice I can think of. Okay, he gives away the piece. I think I gladly accept the rook. He cannot capture with the queen because this would be hanging. Now I think knight e6 is also working. Yeah. The point being, if he captures with the pawn, if queen captures on g6, and this bishop is extremely weak. And I don't see a good way of him defending it. So I'll go for it. And this check also, still he has this pin on f6. I can just move away the king. And he has to do something about this check because the queen is hanging. So either capture with the pawn or the bishop. He has to choose one. Okay, he chooses the bishop. No, definitely he has a move of knight captures b2, which is a bit annoying. And which I have to think about how to deal with. The two plans are queen b3, supporting this e6 for a future capture on f7. Or I can also play queen f3, but the c2 bishop will be hanging. Or why not queen d2, threatening a check here. I think that should be best. Yeah, I think that should be best. Now just queen h6 check is the idea. If he plays knight to c4, I can try queen h6 check.
and then he has to decide where he has to put his queen. He cannot bring his bishop back because I would have rook f7. And now I'm thinking of this sacrifice. I don't know. Let's go for it. I just feel that it is good. Now just capture, and I have queen captures g6. That's the point. And also rook f1 is coming. I just feel that this position is much better. I don't know why he's not making a move. Knight e5, then I have rook f1, protecting this f7 pawn. Although he's protecting g6, but now this threat promotion becomes a huge threat. Yeah, now I can just promote, I think. Yeah, let's just promote. If he captures with the queen, I capture with the rook. And I would be just the queen up. Bishop here, planning queen check. Should have played this also. But yeah, it's fine. Okay, he just hangs the rook. For a 2048, he played really well. We are back in the third place. Just, okay, it's not just, but it's a team game, so 50 points is not much. If our players just, each of them scores a win in Berserk, that would be her 100 points. Okay. 2171. I wouldn't Berserk. Bishop c4. Now I think bishop g4 is coming. Then I'll play queen b3, targeting f7 and b7. Okay, he didn't go for that. I think I'll go for f3 then, just preventing bishop g4. I want the f5 square, so I want the other knight on e3. So d2, f1, e3 is the journey that the knight has to cover. Rook to e1, then knight d2, e1, f1, e3. That's the path. Okay, he wants f5. That is clear as anything. Still go for the plan.
I don't really like this position for him. My bishop is much more superior in this diagonal. And once I get bishop c2 and queen d3, this h7 square would be a huge weakness for me. कोई बात नहीं भूमि, हो जाएगा. Just try for some more time. You would definitely get a win. d5, preventing this bishop from getting activated. Knight e7, bishop c2, threatening queen d3 and this. मेरा भी हालत कुछ बेटर नहीं है, एक एक विन निकालने में मुश्किल हो रहा है बहुत. This tournament is much more stronger than I expected. Queen d3. Okay. Queen g6 खेलने वाला था. My goodness. Now the question is मैं अपना pieces कहाँ पे place करना चाहूँगा. पहले इस बिशप को तो निकालते हैं. बिशप कैप्चर्स h7 एक टारगेट है. अगर वो g4 खेलता है, मैं f4 खेल के ब्लॉक कर देगा उसका. रुक d1. बस टारगेट कर रहा है उसके स्मॉल स्मॉल वीकनेसेस के लिए जो क्रिएट हो रहा है. Probably next targets होगा queen e3, a7 को पकड़ना, या फिर g4 भी खेल सकते हैं. Completely blocking of this file. But the problem is उसके पास e4 भी एक हो सकता है. अभी तो नहीं होगा. ये मूव करना नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा उसके लिए. पहले एक बार सिंपली क्वीन e3 खेलता है, टारगेटिंग h7. फिर अगर वो, ये तो एक मिस्टेक है कि क्वीन कैप्चर e5 चेक. अब मेरे पास f4 है, या फिर और कोई बेटर मूव है क्या. हाँ, f4 खेल के ब्लॉक ही कर देता है डायगोनल को पूरा, आई मीन फाइल को. ये क्या था. अभी थ्रेट इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, अभी सिंपली थ्रेट ये है. थैंक्स मृणाल. अरे पर आप भी खेल लो, खेल क्यों नहीं रहे. अच्छा, ये पीस तो लॉस्ट है. अब बिशप d4 ही थ्रेट है. अब तो उसका लॉस ही होना चाहिए, एटलीस्ट ये गेम तो नहीं हारना चाहिए. क्वीन कैप्चर भी है, बेसिकली अब लॉस है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स है. 4th प्लेस. इवाजीना, ये भी नहीं बोर्सेक कर सकता है.
अच्छा कोई नहीं, अगली बार खेल लेना। e5 and now just d4 is the target. d5 खेलेगा e4 क्या, एंड में ये पॉन मिल जाएगा। हेलो हर्ष, क्या हाल है? Mr. Pawn up, बट ठीक है अभी भी गेम चलेगा, इतना जल्दी तो रिजाइन नहीं करने वाला ये बस। अभी तो थर्ड चल रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सब लोग। e4 पे अटैक कर रहा है, क्या कोई ऐसा मूव? अच्छा डिस्कवर अटैक है, नाइट b4 एक अच्छा डिस्कवर्ड अटैक दिख रहा है। नाइट c2 टारगेट करेगा, बट उसका c5 भी ओपन हो जाएगा, वो प्रॉब्लम है। आई थिंक ठीक ही है। बिशप e3 आएगा, उसके बाद नाइट c2, रुक c1। अच्छा फिर भी मेरे पास नाइट c2 तो है ही। ये पॉन एक प्रॉब्लम हो गया ना। हम्म बच तो नहीं रहा है, तो अब बिशप e7 ही खेलते हैं, फिर रुक d2, रुक d7 करके डबल कर देगा, और क्या कर सकता है। आइसोलेटेड पॉन है, कुछ तो फायदा उठाएगा उसका। नाउ हाउ इज ही प्लानिंग टू डिफेंड दिस? एक आइडिया है नाइट c3 खेलने का, क्योंकि फिर हम नहीं कैप्चर कर सकता, वो आउट कैप्चर बैक करेगा, बट फॉर दिस आई थिंक आई कैन प्ले बिशप f6। अगर वो पॉन पुश करता है, फर्स्ट ये कैप्चर करेगा और फिर ये d5 पे टारगेट करेगा। पहले कैप्चर, फिर d5 को एलिमिनेट। पर रुक टू d2, इसके ऊपर अब ये आइसोलेटेड पॉन्स भी है, तो इजियर है इन सबको कैच करना। और वो मेरे कैंप पे इतना कुछ कर नहीं पाएगा, ये चेक भी देगा, हम किंग d7 कर लेगा। बेसिकली इसको टाइम लगेगा। अच्छा हाँ ये भी था। क्या करे, ये कैप्चर करेगा, वो ये कैप्चर करेगा, फिर आई कैन स्टार्ट पुशिंग। हम्म और शुड आई गो फॉर द सेफ वे? फिर रुक चेक, रुक इधर, फिर वापस रुक इधर, तो रुक इधर। स्लो है बहुत, पर थिंक लेट्स कैप्चर दिस एंड स्टार्ट पुशिंग, देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट मूव में तो बन ही रहा है क्वीन। ओके ये डिफेंस था, इसके लिए तो हम कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गया, पर ठीक है।
It's not easy for him yet. मेरा फायदा है कि हम ये चेक दे के क्वीन बनाएगा, वो चेक देगा पर मेरा किंग बीच में आ। हाँ वो भी है, मेट मेरे को नहीं लगता होगा क्योंकि मेरा उसको पॉन इधर एक तो चाहिए तभी मेट हो सकता है, और मेरे को उसके पहले एक चेक मिल जाएगा और फिर हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ किंग इधर, अब ये चेक प्रॉब्लम ये है वो रोक ही नहीं सकता, और ये क्वीन फिर बन जाएगा, और फिर अगर वो ये पॉन पुश भी करता है तब भी कुछ नहीं होने वाला। रुक से एक चेक आ सकता है, तो हम यही वाला पॉन पहले पुश कर देते हैं। चलो फोर्थ प्लेस, चलो थर्ड प्लेस से बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई चल रहा है। मेरा 18 पॉइंट्स के साथ टीम में भी अभी टॉप 20 में भी नहीं है, पर ठीक है स्लोली एंड स्टेडीली अगर स्ट्रीक मेंटेन करा तो आई थिंक इट वुड बी गुड। बिशप C4, अब ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि मेरे पास बिशप F7 है, देखते हो क्या करते हैं। He didn't fall for that। अच्छा ओपोनेंट का रेटिंग कितना है एक बार देख, अच्छा आई है मैं। हम्म आई थिंक वो प्रॉब्लम में है, बस बहुत आइडियाज है। पहला एक आइडिया नाइट E5, अब अगर क्वीन E5 बिशप कैप्चर F6, प्रॉब्लम ये D7 नाइट बहुत वीक है इसका, इसको उसके साथ कुछ करना होगा। और अगर पर प्रॉब्लम ये अगर हम पहले मार देते हैं और वो पॉन से मार देगा, मेरा नाइट E5 पे आ नहीं पाएगा। दूसरा मेरा आइडिया नाइट इधर, बट आई थिंक उसमें बिशप A3 मार देगा वो। लेट्स गो फॉर नाइट E5, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं क्या करता है। अब बिशप E5 भी खेल सकता है, इतना अच्छा है पोजीशन कि अब वो मार भी नहीं सकता, हम बिशप E5 ही खेलते हैं।
पिन इतना पावरफुल है ना। और ये क्वीन एक्सचेंज का ऑफर दे रहा है। क्वीन इधर खेलता है। हाँ क्वीन जस्ट इधर। अब प्रिवेंट कर रहा है बिशप को मूव करने से, क्योंकि फिर जस्ट G7 फॉल कर जाएगा। फिर मेरा नाइट D2 और E4 पे आना चाहेगा। पहले A3 खेलता है ताकि ये D5 ब्लॉक ना हो। हाँ बट फिर क्वीन E4 भी है उसके पास। क्वीन इधर तो क्वीन इधर। नाइट D2 एक थ्रेट है। देख लिया नाइट D2। आई वाज होपिंग ना देखे पर ठीक है। वो लोग मेरा टीम का डिस्क्रिप्शन देख के उन लोग को अच्छा लगा होगा, पर 3 ही टाइटल है अल्टीमेटली, 3 या 4 फिक्स प्राइसेस दे रहा है ना, तो इट लोगों को अट्रैक्ट करता है फिक्स प्राइसेस ज्यादा। आप थोड़ा बरसेक कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रीक टूट है, एक गेम बरसेक करता है।
G5 और G4 खेलने से क्या प्रॉब्लम है? Let's go for it. Simple idea, Queen H4. Nothing complex. अब बस इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है. उसके प्रॉब्लम ये है कि उसका पीस कैसे डेवलप हो वो कंफ्यूज है. ये नाइट कहाँ से निकलेगा वो समझ में नहीं आ रहा है. ये क्वीन कहाँ से निकलेगा उसको समझ में नहीं आ रहा. उसका ये मेजर प्रॉब्लम है. अब मेरे को सिंपली बिशप को E6 पे लेके आना और क्वीन साइड कैसे करना. और अब ये नाइट के ऊपर भी अटैक है. ये नाइट रिट्रीट भी करेगा तो कहाँ, क्योंकि वरना फिर ये पॉन चला जाएगा. फिर ये रुक के ऊपर टारगेट होगा. तो क्वीन साइड कैसल करना ये तो समझ में आ गया. हम तो पहले कैसल कर देते क्वीन साइड, फिर H5 H4 भी एक आइडिया है सिंपली. अब H5 4. ये एक बैड मूव है. थिंक आई कैन जस्ट कैप्चर. फिर ये कैप्चर करेगा और फिर E2 पे भी सेट होगा. अब ये क्वीन हो गया. हाँ, 622. Closely fighting with the third place. I'm not close but ठीक है, 40 पॉइंट ही डिफरेंस है थर्ड प्लेस यूनाइटेड रॉयल लीग के साथ.
एलिफ चेस इवनली वर्सेट कर सकते हैं. जब तक स्ट्रीक नहीं है वी कैन टेक द रिस्क. जल्दी जल्दी गेम खत्म करना है ताकि एक स्ट्रीक आ जाए और फिर स्लो डाउन. आई थिंक दैट शुड बी द बेस्ट अप्रोच. अच्छा ये ब्लंडर हो गया. क्वीन A4 चेक और फिर ये तीन दोनों पॉइंट चला जाएगा. एज सून एज द प्लेयर प्लेस C4 क्वीन A4 में दोनों पॉइंट जा रहा है. D4 खेलने का मन है या फिर D3. लेट्स गो फॉर D3. D3 में मैं नाइट का एक बैक स्क्वायर कम ब्लॉक होता रहा. D4 खेलते हैं. I don't really like this one. Bishop C3, Bishop G7, then Knight H5. और प्रॉब्लम ये पॉन टेक में बिशप कैप्चर आएगा, रुक और ये दोनों आएंगे. बहुत वीकनेस क्रिएट हो गया एक मूव से. अब बिशप G7 पे Knight H5 बहुत प्रॉब्लमैटिक है. अब क्वीन साइड कैसलिंग करने का सोच रहा है. या Knight D3 is also looking nice. बहुत सारा मूव्स है. कौन सा कैसल करते हैं. pawn takes, rook captures.
ओके, ये तो कुछ ज्यादा ही लक साथ दे दिया। 0.002 सेकंड में वो फ्लैग हो गया। दैट वाज वेरी लकी। मतलब स्ट्रीक आ गया तो अब रिस्क थोड़ा कम लेगा। स्टीव जॉफिन 1963 है, इसमें तो बहुत कर सकता है। 2000 के नीचे रिस्क ले सकता है। I don't like this move. हम यहाँ पे e5 ही खेलते हैं। बिशप ऑन g7 देना एक मेजर मिस्टेक है उसके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डार्क स्क्वायर बिशप बहुत ही इंपॉर्टेंट डायगोनल कंट्रोल करता है और एक बार में उसी को ही दे दिया। अभी वो रियलाइज करेगा प्रॉब्लम। अब g4 तो डायरेक्ट हाथ में परोस के दे रहा है, बट क्या उससे बेटर मूव है? लेट्स गो फॉर g4 ओनली। रुक d8 खेलेगा, देन आई विल प्ले क्वीन e3। अब वो बिशप f7 भी परोस के दे रहे हैं, पर ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद रुक e3। ये क्या मूव है? वो डेस्परेट हो गया है। अब पहले बिशप f7 खा लेते हैं, अगर किंग इधर जाएगा तब तो क्वीन में ही चेकमेट है। अब पॉन से पहले मारते हैं। ये भी एक ब्लंडर है। चेकमेट। ये गेम नहीं रिस्क लेंगे बर्सक पर। स्ट्रीक है, अब स्ट्रीक को मेंटेन करके रखना। लेट हिम बर्सक। टू प्ले रुक e8 और फिर प्लान है e5 पुश करना, ताकि इस पॉन को सपोर्ट मिल जाए। अच्छा, अभी भी कर सकते हैं। नाइट कैप्चर्स, रुक कैप्चर्स, बिशप इधर, फिर e5।
अच्छा, दे रहा है, ठीक है, आई विल हैप्पीली ट्रेड। क्वीन भी एक्सचेंज कर लेगा। Isn't he too confident about his position? I think I'll trade. Let's see. डबल बिशप अगर एक्सचेंज हो गया तो उसका सारा एडवांटेज गया। बिशप C7 खेल सकता है, बिशप E7 भी खेल सकता था। The question is, how should I proceed? E5 is too committal. प्रॉब्लम ये है, मेरे को लगता है पॉन ज्यादा वीकनेस क्रिएट हो जाएगा लाइट स्क्वायर्स में। नाइट G5 इमीडिएटली मूव आएगा, तो नाइट F6 प्रिवेंटिंग बिशप D5, देन आइडिया इज H6 टू किक आउट दिस नाइट। यही एक अच्छा आइडिया लग रहा है। आई थिंक लेट्स गो फॉर इट, ऑल्दो इट्स अ बिट रिस्की, आई वुड डेफिनेटली से दैट, क्योंकि लाइट स्क्वायर्स ओपन हो रहा है। अब नाइट F6, एक बार E4 का चांस मिल जाए तो काम हो जाएगा, और फिर बिशप E6 एक बार आ गया तो मेरा पोजीशन बहुत ठीक हो जाएगा। एक बार E4 H6 और बिशप E6 आ गया मेरा, तो पोजीशन बेटर हो जाएगा कंप्लीटली। He's again going for this. Now I think I'll play this. फिर मोस्ट प्रॉब्ली नाइट D4 आएगा उसका, फिर बिशप D7 डेवलप तो हो गया एटलीस्ट। अब वो प्रॉब्ली बिशप H3 खेल के F5 पे टारगेट कर सकता है। आई थिंक पहले रुक इधर, मेरा टारगेट है, मेरे को नाइट को इधर खेलना है। नाइस, वो बिशप को इधर से लाना चाहता है। दैट्स अ वेरी गुड प्लान। नाइस, तो मेरा टारगेट ये बिशप है, जैसे ये बिशप मूव करेगा C5 फॉल करेगा। हाउ इज ही प्लानिंग टू डील विद दैट? ओके, बिशप कैप्चर्स तो नाइट कैप्चर्स, फिर नाइट कैप्चर्स तो पॉन कैप्चर्स, और अगर हम पहले नाइट से मारते हैं बिशप कैप्चर्स देन रुक C5। आई डोंट थिंक दैट ही हैज एनीथिंग गुड। एक पास पॉन तो मिल ही जा रहा है, उसके बाद नाइट कैप्चर्स, पॉन कैप्चर्स, बिशप कैप्चर्स, ये कैप्चर्स, रुक D8, ये पास पॉन तो आ गया उसके बाद। But I don't think that he would be able to utilize it. Let's go for it. अब मेरा किंग सिंपली अंदर आ जाएगा, और फिर ये पॉन एक आइसोलेटेड पॉन है, should not be much of a trouble.
Plan is nice. Let's try for a mating attack. F4, F3 आना है. That was a good game. एक्सचेंज सैक्रिफाइस के बाद भी क्रिस बहुत अच्छा खेल रहा था. 2-3-2-7 वापस वर्सेक का रिस्क नहीं लेंगे. नॉर्मल गेम खेलना है. I don't really like this move. I'll capture. Queen इधर targeting G2 and C2. Probably queen side castle. फिर हम G2 simply मार देगा क्योंकि मेरा भी queen side castle ही है. अब probably bishop A7 वो try करेगा. कुछ तो pawn का compensation मिलेगा. And then just knight back to C6. And I think I have a better position. क्वीन एक्सचेंज फोर्स कर रहा है.
अब उसका थ्रेट नाइट c6 है और ये पॉन पिकअप करना, ड्रॉ ऑफर कर, शुड आई एक्सेप्ट दैट? नाइट f7 भी प्रॉब्लम है, यहाँ पोजीशन बेटर तो है, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ड्रॉ। देखते हैं कि क्या होता है, खेल के देखते हैं। मेरे पास एक पास पॉन बनने का बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है, उसी के बेसिस पे खेल रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक आउटसाइड पास पॉन बन सकता है। ये तो मिस हो गया। ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 21 पॉइंट दूर है यूनाइटेड रॉयल लीजन से। ये तो बहुत सही है। ये बिशप d6, फिर
E5 खेलने का मन है, पर ये पॉन जाना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पहले रुक पॉन बचा लेते हैं। अब E5 खेल सकते हैं पक्का। और इवन अगर वो बिशप B7 खेलता है, कैप्चर, नाइट कैप्चर, रुक D7, ये दोनों हैंड। H4 H5 खेलते हैं। अब उसका नाइट इधर आ भी नहीं सकता, हम पहले ही ब्लॉक कर दिया, तो सफोकेट हो रहा है बेसिकली ये नाइट। अब E5, ये आइडिया बिशप इधर आना है। रुक टिक्स या पॉन टिक्स? रुक टिक्स करने से ये D7 पे भी थ्रेट होगा, यही बेटर लगता है, और ये नाइट भी पिंड है। अभी बिशप सैक मारने का मन कर रहा है, तो पहले क्वीन को अंदर ला देता, क्वीन इधर, मीटिंग थ्रेट। ओ, ये मेट थ्रेट इतना स्ट्रांग नहीं है, इसका किंग इधर से एस्केप कर सकता है, पर ठीक है, ठीक है। कोई नहीं, मेट थ्रेट नहीं तो ये पॉन पुश करके कुछ करना पड़ेगा। ये तो पीस ही दे रहा है फ्री में, रुक कैप्चर्स कर लेगा फिर क्या, नाइट कैप्चर्स बट फील कर रहा बेटर है, नाइट कैप्चर्स ब्लंडर कर दिया पीस प्रॉब्ली। अब नाइट E6 टारगेट है। रिजाइन, क्लोज है बट क्लोज एनफ नहीं है थर्ड प्लेस टीम से। और थर्ड और सेकंड में बहुत कम फासला है, तो अगर एक बार हम लोग किसी तरीके से कवर अप कर लिए डिस्टेंस, 20 मिनट है, सबको एक एक गेम जीतना होगा, आई मीन स्ट्रीक में।
अरे ये मेड थ्रेट है, अब इसको बचाया भी नहीं जा सकता है। अब ये लैग क्यों कर रहा है सडनली? ये क्या मूव है? अब अच्छा, उसको ये बिशप मिल रहा है, बट अगर हम रुक F4 बीच में डाल दे तो नहीं, सिंपली हम बिशप B3, E6 भी तो मिल रहा है मेरे को। अब थ्रेट है बिशप कैप्चर ऑफ फ्री है। अब H3 को कैसे डील करेगा? This pin knight is very troublesome. Yeah. A sec. आना तो B7 में जाता है, वो क्लियर है, पर हम पहले बिशप B6 के लेते हैं। अगर वो पॉन टेक्स करेगा, क्वीन टेक्स, और अगर वो नहीं करेगा कुछ, मेरे को ये नाइट मिल जाएगा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैकर और डिफेंडर है। अब अगर हम ये कर देता है तो वो क्या करेगा नेक्स्ट? मेरा तो प्लान सिंपल है, अगर वो G3 खेलता है, क्वीन F3 आके मीटिंग थ्रेट। क्वीन चेक मिल भी गया तो क्या, मेरा किंग इधर आ गया, नाइट इतना सॉलिडली प्रोटेक्ट कर रहा है इसको। हाँ, तो अब उसका टारगेट है ये नाइट।
तो क्वीन से पहले ये उड़ा देता है ताकि क्वीन भी प्रोटेक्ट कर रहा है इसको. सिंपली ये भी थ्रेट है. There are just too many threats. अच्छा. After capturing, he wants to capture this. Okay. ये flag down तो. That's sad. Hmm. ये गेम और खेल के फायदा नहीं है.
ये मूव है पर हम सोचे G5 G4 के लिए. Isn't this rook trapped? Knight E7 नहीं जाना पड़ेगा. Rook capture और फिर ये capture. अभी भी बचा हुआ तो है बट ये रुक अभी भी ट्रैप डेफिनेटली है. रुक F4 से निकलना चाहता है पर उसके पहले हम इसका किंग सेट खाली कर देगा. वही गोल है. अभी खेल के फायदा नहीं है. दोनों स्ट्रीम कर रहे हैं. And it is really a streamer pattern. I don't necessarily like this. I'll just play E5. अब F5 और फिर Bishop D4. Although मैं pawn down या पोजीशन बहुत अच्छा लग रहा है. फिर रुक G8 आ रहा है. मैं pieces are flowing. Rook F8, not to hurry.
Knight f5 is best. Knight f5 खेलता तो I would be losing completely. But this move allows me this move. Now target is bishop captures. अगर वो pawn push check भी करता है, I think I can even ignore this. If I capture, queen check, king here, I don't like that. But last Malaysia. But well played everyone. Fourth place पे तो आए. Starting rank 6 था और end में 4. Congratulations to PSBC, 2, Slok, Kenzov, Goku and Iron Man. All of you played great. And आप लोग की वजह से and all the players who came in top 20 also. Because of you, we were able to achieve this 4th rank. So yeah, that was great. And 131 players at the end played for our team. At the starting only 70 were there and now 131. So that's an amazing achievement. So next we would meet in the next tournament that we would be playing in or probably organizing. Thank you for everyone joining in and I would meet you in the next stream. Bye.